हेलो, राधे राधे एवरीवन। सो आज हम देखेंगे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10 का चैप्टर, जो हमारा लाइट चैप्टर है साइंस का। उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस लेक्चर में। सो इसका पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। सो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन इट्स principal axis where all the rays of light parallels to the principal axis and converges after reflection फ्रॉम द मिरर। सो जो हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है कॉनकेव मिरर का, इस अ पॉइंट, वो एक पॉइंट होता है एट इट्स प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहाँ से हमारी जो सारी रेज होती हैं ऑफ लाइट पैरेलल टू द, मतलब पैरेलल हो जाती हैं एंड मीट करती हैं द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। So our next question is, state the law of reflection. So the two laws of reflection are the incident ray, the reflected ray, and the normal to the mirror. At the point of incidence, all lines in the same plane. So the incident हमारा, the reflected ray and the normal to the mirror सारे एक ही प्लेन में हमारे एग्जिस्ट करेंगे. So our second point is, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. ये हमारा सेकेंड लॉ है. सो थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर. सो द रिलेशन इज r is equal to 2f, where r is the radius of the curvature and f is the focal length हमारा होता है. So our next question is, write the mirror formula. So the mirror formula is 1 upon f upon 1 upon v up plus 1 upon u. It is an mirror formula here. F is the focal length and v is the image distance and u is the object distance. Then our next question is, define the refractive index. So the refractive index of a medium is a ratio of speed of light in a vacuum or air to the speed of light in that medium. Uh, it is given by n is equal to c upon v, where n is the refractive index, c is the speed of light in vacuum, and v is the speed of a light in that medium. So our next question is, state Snell's law of refraction. So Snell's law states that n1 sin I is equal to n2 sin r. ये हमारा स्नेल्स लॉ होता है जहाँ पे हमारा n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम होता है हमारा, एंड n2 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम होता है, एंड I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमारा, एंड R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. So our next question is, a concave mirror forms an image 20 centimeter in front of it. When an object is placed 30 centimeter in front of it, find the focal length of the mirror. So we here u is minus 30 centimeter and v is minus 20 centimeter. By using your mirror formula, we get 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. That is our mirror formula. So 1 upon f is equal to minus 1 upon 20 and 1 upon minus 30. So 1 upon f is equal to, if we take LCM, so we get minus 3 minus 2 upon 60. So minus 5 upon 60. So our focal length is minus 12 centimeter. So thus the focal length is minus 12 centimeter is the answer. So our next question is, what type of image is formed by a convex mirror? Draw a ray diagram. So a convex mirror always forms a virtual, erect and diminished image irrespective of the position of the object. So our convex mirror always forms an virtual, erect and diminished image. Then our next question is, a ray of light enters from air into glass having refractive index of 1.5. What is the speed of a light in glass? If speed of a light in air is 3 into 10 to power 8 meter per second. So here we have given n is equal to 1.5, that is refractive index, and c is 3 into 10 to power 8 meter per second. So by using a formula, n is equal to c upon v. So we get v is equal to c upon n, and v is equal to 3 into 10 to power 8 meter per second upon 1.5. So we will get v is equal to 2 into 10 to power 8 meter per second.
Thus, the speed of a light in a glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second is the answer. So the next question is, what happens to a ray of light when it passes through the center of curvature of a convex mirror? So when a ray of light passes through the center of a curvature of a convex mirror, it gets reflected and back along the same path because it strikes back the mirror perpendicularly, क्योंकि वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है एंड फिर सेम पाथ से वापस आ जाता है, क्योंकि बिकॉज इट स्ट्राइक द मिरर परपेंडिकुलरली वो स्ट्राइक करता है. सो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म हुआ. होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा. सो राधे राधे एवरीवन. थैंक यू.